ए देखा भाई अपना वाइसबिज दिखना चाहिए, इस पे फोकस कर. When you talk about real estate, अरे थोड़ा सीरियस भी होने देना. एसोसिएशन का बेनिफिट क्या है? संगठन में शक्ति है, अकेले में सबकी फट्टी है. तो वीकडेज में जब वो लोग फ्री होते हैं तो हम लोग उनको हस्बैंड वाइफ बना के साइट्स पे भेजते हैं. You make your people run on ground. अपन इतनी बार मिले हुए, कभी ये सब बातें पता नहीं थी. Every person gets 2.5 lakh rupees from the government. We were expecting around 5,000 people. Krish, उस दिन 10,000 के ऊपर लोग आए. Crazy. You know, the lead generation Yeah. is 25,000 leads. Now the Lonavla project is called Wisebiz 1. We are talking with Tata Power. We are talking to Starbucks. वो ग्रीन थिंग, जैसे शावर आप 3 मिनट के बाद वापस ऑन करना रहेगा. एंड सर्टन रिस्ट्रिक्शंस एज वेल. गवर्नमेंट विल मेक इट अ कंपल्शन. Hello everyone, welcome back to another episode of Speaking Real Estate Podcast. Today here we are joined by Mr. Chintan Vasani. He is the director of BD Vasani and a partner at Wisebiz Group. He is also the vice president of Mumbai Developers Association UA and also a member of the Naredco Next International. He made it to the Forbes Most Influential Leader list in 2023 and also received an award of MSME Business of the Year by Honorable Minister of MSME in 2023. So Chintan bhai, how are you? I'm super good, Krish. Thank you so much. How has been today? I think आपने मेरा introduction दिया तो आज के बाद I would always say I have made it to the podcast of Speaking Real Estate. So I'm super excited. No. We haven't made it yet. But with you, with us, we will make it. 100%. So we'll dive into our session. So first of all, we'll start off with your education. So after I did my BCom from BD College, and post that I also pursued law for a year. Okay. And during that I realized marketing is something which I love, and for that reason I did my MBA in international business, and so I started with finance, but then I ended up with marketing. So I've done my MBA in marketing and international business, and I'm still I still want to do a summer course. So very soon I might do a small 4-month summer course. So since I am also in my education phase, this becomes an important part for me to know that did the education part really help you in the real estate industry? Because आज real estate के इतने अच्छे schools, colleges या फिर नहीं है, क्योंकि mainly because people make it big in this industry is because of experience and that personal will, I would say. Right. So has that education helped? I differ कि नहीं है, because lately I have a lot of my cousins and my partner's son who is pursuing a special business course which has only to do with real estate, with Niranjan sir's academy is running it. And there are a lot of nice institutions all across the country who offer good real estate courses. There's a very interesting course in London. Okay. If I get a chance, I'll share the link which you can share it with your viewers. Definitely. So, see, if you have time and resources, it makes sense. Because Hamesha, Krish, I have always told this thing to you. After an age, it gets awkward or you are shy to ask for favors. Right. But when you are young, you can reach out to anyone and everyone. And people are also more keen of, helping someone who's in their young phase, in a teenage phase. So if you get a chance, I think you should understand what you want to make your career into. And then there are n number of courses. And don't be scared to come out of it if it doesn't suit you. Because if you're wasting your time, it makes no sense. So try and research for the best institution. Meet people who have actually done that particular course. They would be able to help you better. Definitely more favors are going to come from you, because I know this life hack right now. 100%. So now we'll dive into the background from what made you enter the real estate industry, since I know that you are a first generation businessman in the real estate industry in your family. So my dad, Krish,
Dr. Bharat Vasani. He has done a PhD in tax. Right. And he happens to run one of India's premier taxation consultancy firms, which caters to around 10,000 clients. Okay. उसमें से 1,000 real estate developers है. So because of that, I used to be very closely associated with a lot of real estate people from the very start of my teenage days. Got it. My company used to help them raise funds, and we used to manage their entire portfolio. So we kind of knew how the industry works. And somewhere this industry is very flamboyant. Like, my builder who, it is. this thing I was very fascinated with when I was like, I used to see good structures. I used to see good houses. I used to love कि यार ये चीज को, if I get a chance to make a landmark building, like the whole area is known by that particular landmark. So that is something which I was more keen into. And then while I got into real estate, I understood what is something which I'm still very young. मतलब आपसे बस 3-4-5 साल बड़ा रहूँगा. And I think I will complete a decade in this industry next year. So good times, excited for seeing at least 2 cycles अभी तक देखा है. And excited कि we are at a very good time in real estate. Right now, right. So we'll start off by how you entered the industry. What did you start initially to get associated with the industry? Right. So post my MBA, एक जिद था कि मुझे मेरे कॉलेज का बेस्ट इंटर्नशिप चाहिए या बेस्ट जॉब ऑफर मुझे मिलना चाहिए, प्लेसमेंट. बराबर. So I'm very happy to say that I got placement at a Fortune 50 company, like HPCL, Hindustan Petroleum. Okay. तो मुझे एक जिद था, मतलब घर पे प्रूव करने का कि I can make it. So I went to HPCL for one day. Just like कि I told my dad I have made it to HPCL. अभी आप मुझे सुनाना मत. And my nature is कि अगर मेरे को कोई टास्क देना कि ये तू नहीं कर सकता है, तो वो मुझे करना ही होता है. Because very challenging. So that thing my dad knew, so he always triggered me at the right times. He has always motivated me. और मुझे हमेशा he has asked me to reach for the higher goal. और touchwood उनकी blessing से I have all the right people. Your dad also plays a very important role in my real estate journey. So I have got at the right time right लोगों का support. So that helped. So post my small internship at HPCL, I joined one of our family friends. I joined as a quality control manager. Then मेरे roles थोड़े बढ़ते गए. I joined the purchase department in that particular project. फिर उनका एक project में handover करना था. So I used to go every day to, I traveled by train during my Mitibai college days. But then I had a car and stuff. But then my project which I had to hand over was all the way at Nalasopara. Okay. So, I also wanted to get the feel of it. So I used to travel to Nalasopara almost every day with my sales team. So we used to have our first meetings in the train. उसके पीछे और एक हम लोग का था कि while you are traveling by train, you meet a lot of people who are in that particular area. Right. तो वो जब देखेंगे यार ये टाई वाई में लोग कुछ बात कर रहे, they would want to know what is going on. तो उसी बहाने हम लोग हमारा थोड़ा brochure share करते थे. So I can say at least 15 to 20 inventory in that particular project. We sold it in the train while traveling. So that was my first campaign, I can say, on the field campaign. This time you were working... I was working as so I was handling 3 departments in that particular company. Okay. So you can name that company? It was called Winnie Group. Okay. They have amazing projects at Mumbai western suburbs. Okay. They are very close family friends. And thanks to them, I got a good head start into the real estate industry. And post that, there was one project which they were planning to give it to Vijay Vadva. Okay. Vadva developers. So we kind of convinced the promoter that I think this project is something which we should do. That was the Tanishq which you see at Borivali West. The project is called Elegance. Right. And so they had given a task if Tanishq comes and if we are able to close good people on the higher floors, then this project will do it on our name, like Winnie Elegance करके हम लोग करेंगे. So I'm very happy to say in
even before the building was built, like we were on the 3rd or the 4th slab, an LOI was signed with Tata Group. Tata Okay. को proper presentation मिला था, you know, कि why they should Select or get on come. this particular street. And उस time पे I remember Krish, we were talking to Tanishq, and on the same day there were Joya Lucas, there were Kalyan Jewelers, there was Malabar. हम लोग एक एक या आधा घंटे के गैप में तीनों को बुलाते थे. तो उसी के बहाने, you know, they all the brands know कि we have options, we want the best deal. Somewhere we had a backing towards, you know, the Tata Group company, so we were super excited for that. And very early stage of my career, through processes, Tata Group के साथ, you know, when you are associated, you see how their working goes. तो वो बहुत चीज़ें हम लोग को सीखने मिली. And that's how, like, you know, the career started. Then I used to go to a lot of projects in BKC, in South Bombay. तो मैं हमेशा एक डॉक्टर्स हाउस, एक प्रोजेक्ट मैंने विजिट किया था जहाँ पे खाली डॉक्टर्स थे. Okay. And if you study the micro market where I operate in western suburbs, there are a lot of doctors, but they used to not spend so much into their into their clinic or into their setups. So we did a buy invite project. We actually went to all the doctors. मतलब एक डॉक्टर के पास तो मैं एक रीजन निकाल के गया था. आई एम श्योर इफ इज सीइंग दिस एपिसोड वो हंसेंगे. He's a very famous skin specialist, Dr. Girish Shah. Okay. So I went to him and I'm like, Uncle, I have a skin thing, a small rash which is not going. Can you please see it? So he's like, हाँ बेटा, this is something हो जाएगा. He suggested some medicine. And like मैं बोला, Uncle, you're such a big doctor. There are like almost 150 people waiting to meet you. Don't you think you should have a bigger Place. bigger place? I remember it was a Wednesday. So he's like, I am looking, but बेटा मेरे choice का कुछ मिलता नहीं है. बोला, अंकल कल Thursday आपका बंद होता है. हाँ. This is my card. This is the project just 3 minutes away. We don't have a sales office, but I would want to host you at the site. Got I've it. already signed something with Tanishq, but I'll try if I can get you in the building. So that is how, like, you know, we got him. He referred me 7 to 8 doctors. So big references. We started doing this reference में जो transactions होता है. Got it. He referred me to at least 20 doctors, and we were able to get 7 doctors in like 3 months. Crazy. So all the top doctors in that area were in my building. And then the next meeting I did with the diagnostic center. उनको मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था. उनको है ना एक प्राइवेट इक्विटी है, Sequoia. It's the biggest private equity. They had just funded that company. तो मैंने पूरा रिसर्च करके I went through like a friend. मैंने उनको मतलब he used to stay at Andheri. तो मैंने I knew someone who stays in the same building. उनको मैं presentation I was almost what is your age right now? 20. I was 24. So very young. तेरे जैसा चिकना ही दिखता था मैं भी. तो 24 साल की एज में अभी भी पूरा दिखते हो आप. ब्रोशर के साथ, presentation के साथ I went to him. I'm like, sir, I think I have 8 doctors. Through my sources, I have got to know you are opening 100 diagnostic centers. How do you know? Well, uncle, I also read all the right newspapers. So I would request you if you can drop in once. I have a proposal where I want to own the property and lease it out to you. Got it. So I didn't say I want to bring you. I'm like, I want to own this particular inventory for life, but then I want a brand like you to be associated with us. And I would be very happy, like in a month's time. तभी तक हम लोग का पार्ट ओसी नहीं आया था. So he was kind enough to come, understand. And वो एक प्रोजेक्ट था जहाँ पे वो स्टार्ट से एंड तक Suburban Diagnostic, the Mr. Arora, who used to be the owner of Suburban Diagnostic. Now I think they have sold the entire company to Dr. Lal Pathology. Okay. So, you know, I think reading all the right newspapers, हम लोग के टाइम पे इतना मतलब, of course, I belong to the same time, but उस टाइम पे digitally इतना, it was के digital news इतने नहीं थे. So I think Economic Times and all the right Forbes जैसे आपने बोला. So I always dreamt to be on Forbes, and you know, ये बोलते हैं ना, कायनात मेहनत करती है और आपको दिलाती है जो आपके मन में है. So good things happen. So that was how, like, my career started from the off. very start happened. Then after 3 years, I realized there's time to start my own venture.
there were a few projects as a developer we used to be, हम लोग JV में 2-3 लोगों के साथ कर रहे थे, बट मैंने एक चीज़ रियलाइज़ किया था कि सेल्स एंड मार्केटिंग वाज ऑलवेज समथिंग विच वाज माय फॉर्टे, एंड वो मेरा डिपार्टमेंट था, ऐसा मेरे को लगता था. सो दैट्स हाउ द मैंडेट वाइसबिज रियल्टी, जो मैंडेट बिजनेस स्टार्ट हुआ. Good to know about it. Good to know the backstory because अपन इतनी बार मिले हुए, कभी ये सब बातें पता नहीं थी. राइट. So now we'll have a discussion about mandate. I have a few questions in my mind. We should start off by explaining what is a mandate business. Right. So mandate, basically there are a lot of developers who have handled good projects. They have done a delivery of 40, 50, 30 apartments के उन्होंने projects बनाए हो. बराबर. Now they are doing a project which has 200 apartments. You know, entire process system बदल जाता है, उनका numbers बदल जाते हैं, portfolio बदल जाता है. So then there are companies like Wisebiz, there are other big companies like Anrock, there's Zenidoo, M-Space, a very dear friend. So what they do is, this developers can appoint a mandate agency which will help them do the sales part of it. Okay. Now, how we come in differently, Krish, is we call ourselves we are a market research firm, then a strategic planning company, and we end up as Closure management. So market research जो अपन बोलते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है रियल एस्टेट में. एंड आई एम वेरी हैप्पी टू से वाइसबिज जो हम लोग की कंपनी है, हम लोग फर्स्ट हैंड मार्केट रिसर्च में मानते हैं. लाइक टू गिव यू एन एग्जांपल, देयर आर अ लॉट ऑफ वेबसाइट्स विच गिव यू अमेजिंग कंटेंट कि भाई ये एरिया में इस महीने में कितने फ्लैट्स बिके हैं. देयर आर अ लॉट ऑफ चैनल पार्टनर्स, एसोसिएशंस विच ऑल्सो गिव यू अ लॉट ऑफ डेटा कि इतना कुछ हुआ है. बट मुझे पर्सनली उसके साथ कोरिलेट करने के लिए आई हैव ऑलमोस्ट 200 पीपल इन आवर ऑर्गेनाइजेशन. तो वीकडेज में जब वो लोग फ्री होते तो हम लोग उनको हस्बैंड वाइफ बना के साइट्स पे भेजते. राइट. कि भाई मुझे एक्चुअली कितने रुपए में कितना स्क्वायर फीट बिक रहा है, कौन से प्रोजेक्ट में कितना इन्वेंट्री अवेलेबल है, वो उसका लास्ट रेट कितना है, मतलब यू नो व्हाट रेट आर दे क्लोजिंग, वो डेटा मुझे लेकर आओ. You make your people run on ground personally on your team. I think a lot of developers, a lot of sales mandate company do it. We also do it and we are very proud कि हम लोग और डिटेलिंग में जाते हैं. Fair. मैं खुद भी पर्सनली बहुत सारे प्रोजेक्ट्स विजिट करके मेरा क्वेश्चन होता है, एंड काइंड इनफ बिकॉज यू नो टुडे देयर आर एसोसिएशंस, जब भी BDA का मीटिंग हो, नरेडको का मीटिंग हो, क्रेडाई का मीटिंग हो, all developers they interact. So even that information is very much helpful. क्योंकि अपने 5 प्रॉब्लम्स हो गए, आपके 10 होंगे, किसी और के 50 होंगे. जब 1000 प्रॉब्लम्स का डिस्कशन एक राउंड टेबल पे होता है तो अपने को वी कैन बी रेडी अकॉर्डिंगली. So mandate is this where someone can give the sales right of his or her particular project to a particular company to focus on more different things and वो प्रोजेक्ट को जल्दी डिलीवर कर सके. Got it. Now, from where I see, sometimes like every project, another developer, everybody has a different brand image, different lifestyle they want to sell. And being a mandate company does businesses with multiple different developers, different projects in different areas as well. Every project has a different USP, different lifestyle they want to sell. So how does the mandate company align with these values of the developers or the project of the companies? That is a very nice question, Krish. And ये चीज़ पे even I'll tell you, every company has a different ethos. Like उनका एक खुद का एक mission profile, एक पूरा आइडिया होता है कि how they want to deliver, कैसे उनको अपना ब्रांड इमेज को मार्केट में लेकर जाना है. So what we do is, हम लोग का जो टीम होता है, suppose I am doing one XYZ project in one micro market, तो वो माइक्रो मार्केट में हम लोग के पास समझो 4 प्रोजेक्ट्स रहेंगे. वी आर वेरी लाइक यू नो वी मेक श्योर कि हम लोग के कोई भी कॉम्पिटिटिंग प्रोजेक्ट्स ना हो, या हो अगर होते हैं प्रोजेक्ट्स तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों प्रोजेक्ट्स के HODs और पूरा टीम डिफरेंट होता है. राइट. एंड वो प्रोजेक्ट में अगर आप जाओगे तो सेल्स टीम कभी भी वाइसबिज का बिजनेस कार्ड नहीं देता है.
वो प्रोजेक्ट का बिजनेस कार्ड देता है. So you know they are trained according to what the product is. They are talking about that XYZ project and not giving you option of all the 3 projects. आप कोई भी select कर लो. Okay. You know we are very picky about that. उनको टारगेट्स भी हम लोग ने वो प्रोजेक्ट के रिलेटेड दिया रहता है और एक इंटरनल कंपटीशन होता है वाइसबिज की टीम में. ये इवन आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, देयर आर अ लॉट ऑफ चैनल पार्टनर्स हु एक्सक्लूसिवली वर्क ओनली फॉर वाइसबिज प्रोजेक्ट. हम लोग वो भी ट्राई करते हैं कि एक चैनल पार्टनर है ना जो वाइसबिज में बहुत ध्यान दे रहा है, उसको एक प्रोजेक्ट के साथ एचओडी के साथ उसको टाई अप करा दिया. सो यू नो हिज 100% focus will be on that particular project. I think that is how we can identify and ये जो आपने जो बोला था कि ये इशू आ सकता है, that is how we identify and we solve that particular problem in the mandate. Good to know that. We can talk about like the numbers a little bit where maybe we can get an idea. So there is a lot of cost difference to the developer when it comes to outsourcing the sales thing, because the amount of brokerage he has to pay is increased by a good amount compared to when he builds his own sales and sales team. But obviously it does have its own difficulties as well. So can we show or highlight in a range of numbers that how much more the developer has to pay? I think वो directly indirectly आप पूछ रहे हो कि एक मैंडेट कंपनी को एक डेवलपर क्यों अपॉइंट करेगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. आई थिंक आपको वो क्वेश्चन पूछना है. Fair enough. आई थिंक क्रिश, ये क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं कि व्हाई अ मैंडेट कंपनी. आई वुड से कि जिसके पास टाइम है, जैसे मैंने सबसे पहले बोला कोई 30, 40, 50 फ्लैट्स का प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे हैं. नाउ अचानक दे हैव टेकन अ प्रोजेक्ट विच इज 200, 250, 300 फ्लैट्स. बरोबर. जीरोज बदल गए. Everything has to be done differently. You have to sell faster. The numbers are higher. There is the most important thing is CRM, the Right. relationship management. क्योंकि आपको 5 लाख या 10 लाख रुपए का चेक उठाना नहीं है, आपको वो अग्रीमेंट तक लेकर जाना है, बैंक से डिसबर्समेंट लाना है, और बिल्डिंग जब तक अपने को बनता रहे, रेरा के नॉर्म्स को फॉलो करके पूरा कोऑर्डिनेशन हैंडल करना है. सो a lot of companies will think अरे यार इतना पैसा अगर हम लोग देंगे या हम लोग का खुद का सेल्स टीम में क्यों ना रेडी करूँ. So see, if you have the efforts, the time, and you know, if you want to take the efforts, you can do that. But then there are super specialists who are actually doing that particular thing. Like आपको अगर घुटने का दर्द हो और आपको you know you want to get like it sorted, एक सर्जरी करना है, तो आप वो सर्जन के पास ही जाओगे जो इसका स्पेशलिस्ट है. Right. If you have something to do with your heart, you will go to a cardiologist. The very similar way, sales is something which a mandate company का core competency है. So if there is a company जो आपको वो option दे कि आपको एक इतना बड़ा sales team को भी handle नहीं करना है, क्योंकि आप आज कोई भी project जिसमें 200 के ऊपर inventory हो, just imagine the kind of sales team you will have to keep, HODs you will have to keep, housekeeping staff you will have to keep, coordination staff, CRM staff. It's a huge team. It is Now attrition rate is the highest in real estate. आप कोई भी रियल एस्टेट कंपनी में जाओ, एवरेज 2 साल से ज़्यादा 70% स्टाफ नहीं होगा उनका जो 2 साल से ज़्यादा उनकी कंपनी में आज है, अकॉर्डिंग टू द रिसर्च व्हाट इज हैपनिंग इन मुंबई और एनी ऑफ द माइक्रो मार्केट्स अक्रॉस इंडिया. So वो जो staffing is the biggest headache for any real estate developer. For us, it becomes much easier because we are handling multiple projects. तो मुझे पता है कि एक दिन पे 30, 35, 40 लोगों को deploy ये project में ये phase में करना है. Got it. We have sold 250, 300 inventories. Then there is a different team which is handling the quality control management. They are handling the CRM. तो फिर वो अलग specialist वाले लोग हैं और वो वाली team हम लोग कोई दूसरे project में you know उनको focus कराएंगे. So this becomes easy when there is a mandate company. Secondly, of course, if you go 10 years back, 15 years back, there were a lot of billionaires, millionaires जो घर की शादी करते थे और खुद ही सब काम करते थे. They had all the family friends taking up, you know, ये मैं करूँगा. All the फूफाजीज, मासाजीज taking handling everything. आज कोई नॉर्मल भी बंदा होता है, मिलियनर भी नहीं, नॉर्मल बंदा होता है, वो भी एक वेडिंग प्लानर को अपॉइंट करता है. Right. A mandate company is like a wedding sales planner
or a wedding planner for your project. Got it. दूसरा वेडिंग प्लानर होता है तो लोग बोलते हैं अरे हम लोग को आराम से शादी एंजॉय करने मिला. तो कोई सेल्स मैंडेट कंपनी होगा तो you can enjoy the real estate journey of that particular project. That is what I personally feel. Again, everyone can think differently, but a mandate company can be like an insurance policy that you are taking out, and आपका life थोड़ा chill हो सकता है और आप कोई दूसरे चीज़ों पे जहाँ पे आपका फोकस की सख्त ज़रूरत है उस पे आप फोकस कर सकते हो. I've understood this thing very beautifully. You operate in different micro markets, which Yes, so currently we are in Mumbai MMR. Okay. I have an amazing project in Wisebiz developers coming up in Lonavla. I'm super Great. excited I'm about coming it. over there to stay. And yeah, 100%. And third, we are at KDMC, Okay. the Kalyan Dombivli Municipal Corporation, which is a different market altogether. I would insist, Krish and the people watching it, who have not been to that market, it's a crazy market. You have to explore that because यहाँ पे अपन 100, 200, 300 flats की बात करते हैं. KDMC is all about, my smallest project that we are handling there is around 1200 flats. So, you know, it's fun. It's fun. Equivalent to 10-15 projects of MMR. Numbers are good. So numbers was the reason we wanted to go to KDMC. What is the name of your project? So it's a Pradhan Mantri Awas Yojana. Okay. It's called CP Royal, developed by two giants of KDMC, Charms Group and Padmavati. They both have delivered over 15 to 20,000 inventories, and they have trusted Wisebiz with, you know, handling CP Royal. So I'm very proud about it. It's a project of 1200 flats. Yeah. So And- the phase 1, and it's gonna come up in more phases. Okay, more flats are going to come. So KDMC, हम लोग आ गए हैं. Like, you know, we have big plans for KDMC. So it started in when? And like how many flats we have sold? So we started that project last year at CP Royal. And if you know Pradhan Mantri Awas Yojana, these are projects where the government is your partner. And housing for all, just Narendra Modi and our leadership at the central leadership has decided कि very soon everyone roti kapda makan. So मकान को identify करने के लिए जो government ने प्रधानमंत्री आवास योजना पे फोकस करना स्टार्ट किया है. I'm very proud to say that we are contributing to that vision of the government. We have offloaded almost 50% of our inventory. Like, you know, in the initial stage, we made a movie with an actor to first make people understand what is Pradhan Mantri Awas Yojana. Kyunki, Krish, I'm sure a lot of people watching this would not, even they might not know that every person gets 2.5 lakh rupees from the government as a subsidy if they get eligible for buying a house. And if the house is say 20 lakh rupees, आपको 10% पैसा government दे रहा है. What are like the specifications or a requirement for a project to get listed under Pradhan Mantri उसमें Awas? multiple specifications होता है. I would insist people to Google Okay. that particular thing because, you know, if there is anything else I would have missed, so it would be more ideal. But then not every company, every one gets PMAY का permission. वो specially दिल्ली से आता है. Okay. और ये 2.5 lakhs का जो subsidy है, it's divided into two parts. One comes from the central government, one comes from the state government. However, PMAY different in CP Royal is, वो पूरा जो सब्सिडी लाने का जो जिम्मा है वो हम लोग का कंपनी खुद कर रहा है. So, you know, that becomes easier. But my appeal to everyone who is thinking to buy a flat or who is thinking to buy any of the houses, you should know about the different policies of the government. One. Second, मैंने recently सुना है जो there are a lot of people who are into some associations. पद पेड़ी होता है. They work for like a few of the government organization. उनको कोई special benefits मिलता है. जैसे आपने सुना होगा अगर women के नाम पे if you are taking a loan, you get some benefits. So I would insist anyone who is thinking to buy a house, to invest into real estate, understand the kind of
policies government is offering to your kind of people. What is for Krish is not for Chintan. What is for Chintan, it is not for someone else. Right. So हर बंदे क्या Depending upon his... आप एलिजिबल अलग अलग चीजों में होते हो, तो थोड़ा वो रिसर्च करना भी जरूरी है. एंड स्पेशली मेट्रो सिटीज वाले ना, वी डोंट नो a lot of things about the great things government is doing. Okay. So Interesting. PMAY, I think you should have a special, we should call someone who is actually can help you with entire PMAY. Because That it is can a be one of- very huge thing. 100%. That And- can be one of your podcast. And the numbers जो PMAY में हो रहे हैं, it's phenomenal. Like, it's different. And the government is right now, they want housing for all dream project है अपने prime minister sir का. If you are supporting that, the government is more forthcoming. If you want to and the satisfaction that you get when, see, you sell a 10, 15, 20 crore home, it makes you feel good. But जब वहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना वाले हमारे प्रोजेक्ट में, जब वहाँ पे हम लोग किसी से इंटरेक्ट करते हैं, वो बोलते हैं कि हमारे लाइफ में दिस माइट बी द ओनली प्रोजेक्ट फॉर अस जहाँ पे हम लोग घर ले रहे हैं. एंड वो जो सेटिस्फैक्शन मिलता है क्रिश, it's something else. I was very fond of KDMC market and the numbers. Like, we were doing, say, roughly around 900 to 1200 flats in a year from last few years. From this year, the numbers will double. Thanks to, we have entered KDMC market. And यहाँ पे जो numbers बढ़ने के chances और बढ़ जाते हैं. It is helping the nation develop more faster and better way. Right. And Infra, like आप अगर आज I remember seeing a podcast of, I'm big fan of Niranjan Hirandani sir. okay. So he said, I made a lot of projects in like a micro market called Andheri, but मुझे satisfaction नहीं मिला क्योंकि वो roads में मेरा कोई हाथ नहीं था. But when you are making a 1300 flat project, you are making your internal roads. Like, we are talking to DMart at the KDMC project. Okay. So we might have a big store वहाँ पर. We are planning to have restaurants. We are planning to have coffee shops. 7-Eleven जैसे, there are small stores. So, उसमें पूरा infra design करना है, लोगों का flow design करना है. Swimming pool को छोड़कर हर एक amenity वो project में है. We are developing in My1. So now imagine, हर एक चीज superior construction quality and the rates are around this, शायद ये podcast बाद में कोई देखे तभी rates बढ़ गए हो, but right now in 2023 we are offering the flat for 20,50,000 rupees and you get a government subsidy of 2.5 lakh rupees. How much square feet the houses of these Roughly around 400 odd square feet. Good. So it's a nice house. The same project वो चाम्स हम लोग का और एक प्रोजेक्ट है, वो सेम प्रोजेक्ट इज अराउंड 30-32 लाख रुपीस. वही प्रोजेक्ट आपको 10 to 12 lakhs कम में आज मिल रहा है. We just gave possession to around 800 flats 3 months back. We had the entire star cast of तारक मेहता का उल्टा चश्मा. We had a few Marathi actors. We were expecting around 5,000 people because 750 फ्लैट्स का हम लोग पोजेशन देने वाले थे. क्रिश, उस दिन 10,000 के ऊपर लोग आए. इनसेन माहौल था. एंड the numbers are different. Like, we talk about 500-600 people coming up for a walk-in हो रहे हैं. वहाँ पे 5,000 walk-ins हो रहे हैं. Crazy. The lead generation is 25,000 leads. So everything में extra zero बढ़ जाता है. एक अलग high मिलता है. I feel if you want that high, you have to explore the KDMC market. Good. Never knew about this whole KDMC market or anything about that. Good to know about all of that. We can dive into your Lonavla project. Whenever, Krish, I speak about the Wisebiz One ideology जो हम लोग अभी, it's a future perspective that we are thinking to turn 100% green. We will be rebranding ourselves as Wisebiz One. One is organic, natural, eco-friendly. So after I got married to my beautiful wife, Dr. Kripali Thakkar Vasani, my father-in-law, Dr. Krishna Thakkar, he's a leading radiologist, and
He happened to buy a lot of land parcels in Lonavla, in Gujarat, in Dahanu, a few other micro markets. And post-COVID, if you study the data, रियल एस्टेट जो बूम अपने को बॉम्बे में मिला है, चेन्नई में मिला है, दिल्ली में, नोएडा और वो सब मार्केट्स, माइक्रो मार्केट अपना बोलते हैं कि सिटीज़ में जो बूम मिला है, उससे 2x बूम सेकेंड होम मार्केट में मिला है. Okay. People have started traveling. People want to stay in a Airbnb. They want to rent a villa, rent an apartment rather than staying in a hotel. So that market has gone off the roof. That was one of the reasons why we wanted to enter that particular segment. Now the Lonavla project is called Wisebiz 1. It's not a green project, not just a green project, but we are planning to give a green lifestyle. ग्रीन एलिमेंट्स, कंस्ट्रक्शन एलिमेंट्स के साथ साथ हम लोग ऐसी कुछ चीज़ें करना चाहेंगे जिससे आप ये ग्रीन लाइफस्टाइल को आगे लेके जा सके. टू गिव यू अ वेरी सिंपल आइडिया, ऑल द बिजनेस कार्ड्स जो मेरे टीम के बनेंगे, मेरे पर्सनल बनेंगे, वो इधर ई कार्ड होगा जो NFC में मैं आपको मतलब सेंड टैप करके सेंड कर सकता हूँ. और अगर फिजिकल कार्ड्स बने तो वो कार्ड को आपने नंबर्स एंड वो सब नोट करने के बाद फेंकना नहीं है. आप एक पौधा लीजिए, उसमें डालिए, पानी डालो और कुछ मंथ्स में वहाँ से प्लांट निकलेगा. सो इट विल हैव सीड्स इन इट. सो नन ऑफ दोज थिंग्स विल गो टू वेस्ट. देयर विल बी नो प्लास्टिक बॉटल्स. वी आर प्लानिंग टू हैव स्टेट ऑफ द आर्ट वाटर ट्रीटमेंट, जिससे जो नल का भी पानी आएगा वो फ्रेश पानी होगा जिसको आप पी सकते हो. We are talking with leading car companies. We are talking with Tata Power to set up like पेट्रोल पंप्स कैसे होते हैं वैसे अगर लोनावला में अगर कोई भी वहाँ पे रहेगा और उसको सुपर चार्जर की ज़रूरत होगी तो वो अपने प्रोजेक्ट में होगा. We are talking to Starbucks, negotiating with them. We are discussing with one more Canadian coffee store. So जो भी वो कॉफ़ी स्टोर में आएगा, they can charge their car. Anyone or everyone who has a e-car which they own, they will get a special rate. Or if things work out, we will only give this particular house to people who have a electric car. You know, कुछ चीज़ें हैं जो शायद practical ना हो, but we want to give this a lifestyle. For sure, there will be a lot of places where cars will not be allowed. So car-free zone होगा. Right. And you are treating the water multiple times. Very excited. And Lonavla in monsoon is next. It's very beautiful. How big is this project? So the land that we own is roughly around 3.5 acres. Okay. And we are in talks with a few other land parcels which are adjoining our particular land. और जिससे भी कृष ये discussion हुआ है, they have been forthcoming कि भाई we want to be part of this journey, and if things work out, we will have a master plan of approximately 6 to 8 acres in the first phase. Can we discuss more about the green part of this whole project, like how in terms of electricity will be used, how in terms of many other things that makes this project more of a green project and not a normal villa in Lonavla? Right. So if you study why solar जितना पिकअप होना चाहिए उतना पिकअप क्यों नहीं हुआ है, because it is super expensive. Right. But what we are trying to do is we are having a central solar plant. So if things work out, entire electricity or major part of it would be taken care by the central solar system of the particular project. One, लोगों को जो मैंने मेरे आगे वाले पॉइंट में बोला कि लोगों को ग्रीन बनने में प्रॉब्लम नहीं है, हाँ, बट वो ग्रीन लाइफस्टाइल को आगे कैसे लेकर जाना है, उस पे आई थिंक रियल एस्टेट डेवलपर्स हैव टू कम टुगेदर एंड फोकस ऑन दैट. सो आई गिव यू वन एग्जांपल. वी आर टॉकिंग विद अ कंपनी, अ जर्मन कंपनी जो फॉसेट्स बनाते हैं. फॉसेट्स मतलब पानी का जो नल रहता है. ओके. दे आर लीडिंग कंपनी इन द वर्ल्ड राइट नाउ. तो दे हैव अ स्पेशल प्रोडक्ट व्हिच वर्क्स ओनली फॉर 3 minutes. तो आपने शावर का फॉसेट ऑन किया, वो 3 मिनट के बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा. ओके. सो इससे क्या होगा, आपको 15 मिनट नहाना है बट
आपको टेक्निकली वो 15 का 20 होता है, 10 होता है, यू डोंट नो, राइट बट वो 3 मिनट के बाद बंद हो गया और आपको लगेगा कि मैंने ना लिया। ऑटोमेटिकली एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, वो वापस ऑन नहीं करेगा। दिस विल सेव अ लॉट ऑफ वाटर। अग्रीड So, we are trying to bring in all these elements. There will be sensors all across the projects कि रात के टाइम पे सब लाइट्स ऑन नहीं है। गॉड अगर वो लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 जन चल के जा रहे हैं, ऑटोमेटिकली दैट सेंसर्स विल आइडेंटिफाई कि लोगों का मूवमेंट है, तो वो लाइट्स ऑन होगा। राइट एयर कंडीशनर्स जो होते हैं आजकल उसमें सेंसर्स आ गए हैं कि दे सी कि 5 पीपल है, 10 पीपल है एक रूम में, तो उतना ही कूलिंग करना है। Same with the lights. So, a lot of elements we are working on, and it's a prototype which I will be more than happy to share it with my friends in Mumbai, in Lonavla, in Pune. They can, and I'm making sure, Krish, there is one more element. Like, my father-in-law, even my cousin, my brother-in-law, Nigam, he is right now studying green architecture, green construction. So we as a company are super keen to help this green revolution. राइट And in next few years, see, this is an insight that I'll share. आज अपन कर सकते हैं या चॉइस है अपने को, बट आफ्टर अ फ्यू इयर्स गवर्नमेंट है ना, वो फोर्स करेगा. सो इफ यू आर रेडी विद दिस रिवोल्यूशन, it will be much easier for you. Talking from a sales point of view, like abhi people go to Lonavla to enjoy, relax, chill, sit in the bathtub for a few hours, enjoy the swimming pool, and मतलब relax करने जाते हैं. Now coming in perspective of this whole green thing, जैसे shower आप 3 मिनट के बाद वापस on करना रहेगा, and certain restrictions as well. As you walk, the air conditioning will be turned on automatically that time. A good point as well. I'm not against all of this. I'm very excited and also supportive that this will automatically be changed after some period. Government will make it a compulsion. But right now, अगर option है सामने कि पूरा ही you can have a relaxing thing and this certain compulsion, how will you like talk about like to tackle this issue? Your point is bang on. जो आप बता रहे हो ना, a lot of people still have that in mind कि green मतलब Restricting your life. restrict कर रहे हैं या हम लोग को force कर रहे हैं. It's not, this is like a salad जब अपन खाते थे, Right. आज से 5-6 साल पहले अगर आप जाओ तो लोगों को ऐसा था यार सैलेड तो यार हम लोग को अच्छा खाना है. But now there are amazing salad stations, there are amazing places which make healthy food, and you look forward to go to such places. So our project would be a similar thing. One. Second, I'm talking about luxury, but it's called ethical luxury. हम लोग ने demographic study किया. So जिसको green revolution में interest होगा, आज you might have, I'm 100% sure, आपने electric cars में बैठे रहोगे. Right. They are much better than the normal cars right now. They are. और वो every day और better होता जाएगा. But my target audience in this electric car, जब हम लोग demographic study कर रहे हैं, it's not someone who would want to buy a Tata Nexon. Right. It is someone who will insist on buying a Mercedes EQS, or he'll wait or import a Tesla. Got He it. wants the best, but he wants the green best option available in the market. So 3 मिनट के बाद ऐसा नहीं है कि 3 मिनट के बाद पानी नहीं आने वाला, बट जब कृष नहा रहा है और वो 3 मिनट के बाद उसने रियलाइज कर लिया कि यार मैंने एंजॉय, सी आप बाथटब में एक बार पानी जब यूज करते हो, आप वहां पे 10 मिनट बैठो या 5 मिनट बैठो, पानी उतना यूज होने वाला है. बट व्हेन यू आर हैविंग अ शावर, ऑटोमेटिकली इफ देयर इज अ टाइमर ऑफ 3 और 5 और 10 मिनट, यू नो कि भाई 10 मिनट में इतने लीटर्स मैंने Consume किया. Like my team is also working if we can make an app of Wisebiz One जो actually बताए कि आपने कितना कंजम्पशन चीज़ों का किया है और कितना आपने कार्बन एमिशन कम किया है compared to someone else. Like we want to make it like a thing to be proud about. Like I have invested, or I have a house which is 100% green. It is a proud thing. Something like that. Like I remember, I'm a big fan of दिया मिर्जा. मैंने दिया मिर्जा का कुछ साल पहले एक वीडियो देखा था जब उसने ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में, उसके पूरे ग्रीन घर के बारे में बताया था. क्विंट का एक वीडियो था, एंड दैट वीडियो हैड मिलियंस ऑफ व्यूज ऑल्सो बिकॉज दिया मिर्जा इज ब्यूटिफुल, बट स्टिल पीपल वर इंटरेस्टेड, एंड आई हैपेंड टू मीट हर
So she travels around with a तांबे का बॉटल. अगर आप कोई भी इवेंट में उनको मिलोगे, कभी भी प्लास्टिक बॉटल्स को वो हाथ ही नहीं लगाएंगे. Right. We might consider her as one of our brand ambassadors for Wisebiz One. So this ideology, she's connected with UNESCO, UN के साथ green living के ऊपर she's talking about. So green today might be something लोगों को ऐसा लगता हो कि restriction है, but मैं predict कर रहा हूँ कि next कुछ सालों में green will be a USP of a project. One, people will want to take green, like आज जैसे लोग इलेक्ट्रिक कार्स को प्रेफर कर रहे हैं ऑन फॉसिल फ्यूल कार. इलेक्ट्रिक कार्स को लोगों को जैसे खरीदने के लिए एक भीड़ है, एक पीपल आर गोइंग आफ्टर इलेक्ट्रिक कार लॉन्चेस. सेम ग्रीन विल बी लाइक फ्यूचर का अल्टीमेट सेलिंग पॉइंट ऑफ अ प्रोजेक्ट. This whole thing is very exciting for me, and it also makes me think of it's like a new vision and sounds very exciting, and would be very happy to see this happening. What is the average square feet rate in Lonavla? Again, I'll be very honest to you. This is my thinking, Krish, is you do all the market research. Right. You understand what has worked in last 3 months, what has worked in last 6 months, what has worked in last 2 years. आपका current competition क्या है, और जब आप अपना प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर रहे हो, आप खुद उसका प्राइसिंग डिसाइड करो. आपको कितना प्रॉफिट लेना है वो खुद डिसाइड करो. यू रन द मार्केट. यू शुड ऑलवेज क्रिएट अ प्रोडक्ट विच पीपल वॉन्ट रेदर देन प्लेइंग दैट प्राइसिंग गेम, स्क्वायर फीट गेम. आज लोग क्या कर रहे हैं, एक अच्छा प्लेयर आ रहा है और वो 1 BHK बना रहा है 300 स्क्वायर फीट का. अरे 300 स्क्वायर फीट में आप घर नहीं बना सकते. इट्स टू स्मॉल. लाइक आई अंडरस्टैंड देयर आर फ्यू पीपल हु ड्रीम ऑफ बाइंग अ हाउस एंड फॉर देम a 300 square feet will be a game changer thing for them. But then understand the market. Today, few years back, 1 BHK बिक रहा था. आज अब बहुत सारे माइक्रो मार्केट्स है मुंबई के, वहाँ पे 1 BHK नहीं बिक रहे, 2 BHKs भी नहीं बिक रहे. 3 BHK was the best inventory which is sold. So pricing, of course, it is important, but understanding what works, what square feet works, changes the entire game for you. In Lonavla, we will have both the offers where we will have a bigger 3 BHK villa which will be not less than 2000 square feet with a nice lawn and everything, and we will have a row house which might be 2.5 BHK which will be in the range of around 1200 to 1500 square feet. Pricing, I'm not very sure right now, but it will be a very competitive rate. और आप pricing को बाजू में रखो. I'm sure about the product. You will be the most satisfied person after buying a house. One typical sales वाले का आंसर था, but I am 100% sure about my product. No, one thing I learned right now is like make a product and you set the price. Exactly. So again, I'll come back to Mumbai right now. So going back 2 years back, the government launched the 50% premium scheme, where along with the reviving the stalled projects, it also gave a boost to people entering the real estate market and starting up huge more projects. So right now the inventory is very huge in Bombay. What are your thoughts on about this current so much inventory in Mumbai? So I'm very proud to say that the real estate fraternity, be it Naredco, be it MCHI Credai, be it Brian Mumbai Developer Association, there's a great unity that we real estate developers have. There are a lot of associations which came together post-COVID to make the government authorities understand our, the problems that we face and to give a boom. ये 50% of the scheme को हम लोग ने request किया and the government was kind enough. The central leadership also was kind enough to boost that particular premium का जो benefits लेकर आए. And you can see there is a data that in MMR, there are not less than 12,000 buildings which are under redevelopment today. और उसमें से more than 1200 projects
are in Borivali West, the micro market where we are very active in. Now a lot of people say कि यार इतना inventory आएगा, Right. तो इतना रिक्वेस्ट, इतना मतलब इतना Demand. डिमांड है. सो मेरा क्वेश्चन उनको एक ही है कि आज से 4-5 साल पहले अपन जब एंटीलिया देखते थे तो ऐसा लगता था कि अंबानीज आर वेरी हैप्पी, Right. ये घर तो वो लोग लाइफ टाइम इधर ही रहने वाले हैं. बट आज मिस्टर अंबानी इज ऑल्सो लुकिंग फॉर अ न्यू हाउस, क्योंकि उनका वन मोर सन इज गेटिंग रेडी टू गेट मैरिड. ही वुड वांट टू हैव हिज ओन सेटअप. There were talks that they were planning to have a house in Dubai. So my point is, families are growing. People have understood they want bigger spaces. And post-COVID, zindagi na milegi dobara, that one psychology has happened. People have started traveling more. People have started investing into lifestyles, investing into a bigger house. They have understood a house is the best investment that you can have, because उसमें एक आपके पैसे भी पड़ रहे हैं. One, second, you are also enjoying that house. Right. Over the time in Mumbai, कोई भी प्रॉपर्टी आप ऐसा नहीं बोल पाओगे कि मैंने 100 रुपए की ली थी आज 80 रुपीज की हो गई. वो बढ़ा ही है और ये बढ़ने ही वाला है क्योंकि यहाँ पे डिमांड इतना है. सो द माइक्रो मार्केट्स को स्टडी करना बहुत जरूरी है. आई पर्सनली थिंक वी आर इन अ 10-year बूम और अभी 3rd year चल रहा है ऑफ रियल एस्टेट. दिस इज स्टिल गोइंग हायर. प्रीमियम्स वापस हो ना हो, बट स्टील का भाव, सीमेंट का भाव इज ऑफ द रूफ और ये बढ़ते ही रहने वाला है. मेरा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, आज इतने ब्यूटीफुल जगह में हम लोग बैठे हैं, चेक द रेट्स व्हाट वी आर पेइंग. Right. द ग्लास फसाड आपने जो प्लान कर रहे हो उसके रेट्स बढ़ गए हैं. हर एक चीज माइवन आप जब लेकर आ रहे हो उसके कॉस्ट बढ़ गया है. सो मॉरल ऑफ द स्टोरी, कंस्ट्रक्शन का जो प्राइस को जो डिटरमाइन करता है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, वो ऊपर जाने ही वाला है. सो आई फील डिमांड रहने वाला है, प्राइसेस भी बढ़ने वाले हैं, ग्रोथ आपको 100% मिलेगा. और अगर आपने इन्वेंट्री पकड़ ली या चूज कर ली चॉइस वाली इन्वेंट्री, दैट इज गोना बी द गेम चेंजर. बाइंग अ हाउस विच हैज अ गुड व्यू. एक प्रोजेक्ट में आके 200 फ्लैट्स रहेंगे, 200 के 205 तो नहीं होने वाले. Right. So you be the first one to buy the 200 flats. Got it. One of that flat. That will make a game-changing thing for you. To add to this whole concept where I am agreeing with you and it cleared my mind also a little bit, what do you think on a largest perspective of India's real estate? Krish, India's real estate is in a जो boom phase है, 100% we are on the boom phase as India, as brand India. Like you see G20, central leadership जो vision के साथ बढ़ रहा है. You travel any part of the world, people have started recognizing our power. Our strength is the numbers that we have. One. Second, our economy is growing. Today we say we are trying to touch 5 trillion by 2028. Suppose वो 2030 भी होता है, but 5 trillion होने ही वाला है. एक, अगर उसको आप स्टडी करोगे, right now we are 7.5 to 8% of the total economy or the total GDP of our country. Right. Real estate as an industry. By 2038, we will be 15.4% of the total GDP, and we ourselves will be 6 trillion real estate as an industry. So just imagine the kind of future that we are thinking about. Very recently on a podcast, दिल्ली की एक यूट्यूबर है, उन्होंने पूछा था, तो मेरे पास एक डेटा था, आई शेयर्ड विद हर. चाइना के साथ अगर आप इंडिया को कंपेयर करोगे, Right. ठीक है, Okay. इंडिया में इस साल 650,000 फ्लैट्स ईयर एंड तक अपने बिकेंगे. अपार्टमेंट्स जो बोलते हैं मेन सिटीज में, Got it. 650,000 flats will be sold in India. And it is supposed to be the best year of India, like the best year of India. Now compare that with China. China's worst year is going right now for real estate. They have already touched 1.2 crore homes. And it's the worst year. They sell a lot of homes.
उनका भी बूम आप देख रहे हो कुछ सालों से चल रहा था, अपना बूम तो अभी स्टार्ट चालू हुआ है। और कभी भी कोई इकोनॉमी जब इतना ड्रास्टिकली बढ़ने वाला है तो सबसे ज़्यादा इंफ्रा प्रोजेक्ट्स और रियल एस्टेट बढ़ता है। एंड यू कैन सी हाउ आवर ऑनरेबल मिनिस्टर नितिन गडकरी जी, हिज विजन ऑफ मेकिंग द बेस्ट रोड्स, बेस्ट हाईवेज, बेस्ट इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, ये सबका बूस्ट अपने को मिलता है। लाइक आई वाज टॉकिंग अबाउट KDMC, काइंड ऑफ इंफ्रा दैट इज कमिंग अप इन KDMC, mind boggling. Mumbai metro, Bro. it will change the entire way. Like I remember traveling by train to my college, Mithi Bhai. It used to be like painful for me because just school से आकर अपन train का journey start करेंगे. Now if I have friends staying in the same area where I stay, they go to colleges or schools, they have so much options. AC buses है, they have metro. There are so many options. So इंफ्रा और उसमें इन्वेस्टमेंट जितना बढ़ेगा उतना आपको रियल एस्टेट में दिखेगा बूम आ रहा है. एंड ऑल दिस इवेंट्स विच हैपन, G20, देयर इज वाइब्रेंट गुजरात हैपनिंग इन अ फ्यू मंथ्स. ये सब इवेंट्स में जब NRIs आ रहे हैं, they want to again come back to India or they want to have a piece of India. Right. That helps in the growth story of India. So amazing times. I am super excited to be part of real estate fraternity, real estate industry right now in 2023. I'm agreeing with you, and I am too very bullish about the Indian real estate market. But seeing now there are various parts of the world which are having like war-like situations, and many countries are also facing recession. Compared to that, will we still keep on growing in the future, or will it get hampered because of the other nations? So, Krish, of course, we have to respect what is happening. You can't say India में बहुत progress हो रहा है, मेरे को बाहर के कंट्री से फ़र्क नहीं पड़ता है. 100% फ़र्क पड़ता है. लाइक वी रिमेंबर जब रशियन इन्वेजन हुआ था यूक्रेन में, बहुत टाइम तक वो चिप्स का प्रॉब्लम था जिसके कारण कार इंडस्ट्री जितना अफेक्ट हुआ था, उतना ही रियल एस्टेट इंडस्ट्री के भी बहुत सारे कंपोनेंट्स में चेंज आया था. अचानक अ लॉट ऑफ थिंग्स का रेट्स में वेरिएशन आया था. सो ऑफकोर्स 100% बाहर पूरे वर्ल्ड में जो हो रहा है उससे अपने को अफेक्ट 100% होता है. बट उसका एक अलग साइड भी है. अगर आपने स्टडी किया हो तो दुबई रियल एस्टेट मार्केट वेंट ऑफ द रूफ व्हेन समथिंग बैड हैपन इन रशिया. व्हाई? अ लॉट ऑफ रशियन बिलियनर्स started investing, a lot of Russian billionaires starting parking their money in Dubai real estate. Got it. Now, this thing is happening in a different side of the world where that particular war-like situation is coming up. तो कुछ लोग होंगे जो इंडिया को भी एक ऑप्शन देखेंगे. Right. एक सेकंड, अपने जो NRIs है आज वो लोग भी ग्रो कर रहे हैं डे इन डे आउट. They also want to come back to our country at any part of the वो सोचेंगे कि मैं आज लाइफ के 5, 15, 20 साल के बाद जब इंडिया वापस जाऊंगा, इंडिया में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ देखेंगे. See, today the India story is not only focused to India. आज आप बाहर के कोई भी कंट्री में जाओगे, वहाँ पे people know the kind of infra development is happening. They know the growth, the kind of रियल एस्टेट रिटर्न्स दैट इंडिया इज ऑफरिंग. अपना सेंट्रल लीडरशिप जैसे ग्रो करेगा, ऑटोमेटिकली इंडिया एज अ ब्रांड विल ग्रो एंड उसका 100% इंडिया इकोनॉमी भी ग्रो हो रहा है. और जैसे लोगों के पास पैसे आएंगे वो लोगों को अपना घर अपग्रेड करना होगा, अपना ऑफिस अपग्रेड करना होगा. सो वो रियल एस्टेट पे एक बूम ही होगा. Fingers crossed for all of this to happen. Coming to the investment part, since we delved into the whole investing of abroad NRIs into India, I would like to have some tips for people. How can they start investing in real estate through various sources? And apart from, if not the youngsters as well, because mainly the target audience is the older people, for them as well. Again, आप जिस घर में रहते हो, आप जिस ऑफिस में ऑपरेट करते हो, मैं उसको पर्सनल लेवल पे इन्वेस्टमेंट पकड़ता ही नहीं हूँ. Right. That is something that you are enjoying and over the time उसमें जो भी आपको ग्रोथ मिलता है वो आपको ग्रोथ मिल रहा है.
appreciation. So that is, I personally, I don't consider that as an investment. आपका घर आज 2x हो गया 5 साल में, हाँ. और अगर आप वही घर को 10 साल एंजॉय करोगे तो आपको क्या फर्क पड़ेगा? यू विल बी वेरी हैप्पी, यस, आप खुश रहोगे. आप अगर कोई फंड रेस करना चाहते हो कंस्ट्रक्शन लैब या हाउसिंग लोन लेकर, इट्स अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव. बट लेट्स नॉट कंसिडर the thing that you are enjoying as an investment. Understood. Now let's talk about investment. I always insist on my friends or any of my investors who ask me कि आपको किधर इन्वेस्ट करना चाहिए. जो भी मेरे रियल एस्टेट फ्रेंड्स हैं जो रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस बना रहे हैं, शायद मुझे they will not be very happy with it, but I always tell my friends or whoever who wants to invest, I say go for a commercial property. The kind of rental income that you get in a commercial property is most of the times much higher than what you can get in a residential property. One, you should always know the end goal. अगर आप कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपके माइंड में पिक्चर क्लियर होना चाहिए कि ये जगह को मुझे रेंट पर देना है, कभी रेंट पर दूंगा, किसको रेंट पर दूंगा. बिल्डिंग का पोजेशन मिलने के 3 से 4 महीने पहले स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट. अंडरस्टैंड द माइक्रो मार्केट. देर आर सो मेनी वेबसाइट्स. आज जो चीज़ कोई भी कंपनी को, वाइसबिज जैसी मार्केट रिसर्च कंपनी को आज से 10 साल पहले जो मार्केट रिसर्च करने को कम से कम 1 महीना लगता था, आज वो हम लोग आधे दिन में कर देते हैं. और कोई भी नॉर्मल पर्सन अगर खुद करना चाहे तो 3-4 दिन में वो माइक्रो मार्केट 100% समझ सकता है. There are so many websites. There are, let's also mention about Abhishek, one of my very dear friends, who has started CRE Matrix. You get all the data of all the micro markets. कि कौन सा फ्लैट कितने रुपए में बिका है, उसके अग्रीमेंट के साथ आज मिल जाता है. So you know what is happening. आज कौन से रेट में क्या चीज़ चल रहा है. रेंटल्स आपको इतने सारे वेबसाइट्स पे you get all the data. So whatever you can rent, you should buy. That is your ideology. Keep that framework ready. Second, there are a lot of properties. Like even we have a lot of portfolio of pre-lease properties. Like the Suburban Diagnostic, which I told you, after enjoying the rent for a few years, that was sold to an investor who wanted it because it had a diagnostic center, a good brand giving rent every month. Right. So, a lot of people are interested into pre-lease properties. There are good numbers you might have heard recently. वेस्टर्न सबर्ब्स में 3 बड़े ट्रांजैक्शंस हुए जो 100 crores के ऊपर थे. And I'm very happy to say one thing was common in all 3 transactions. It had Wisebiz directly, indirectly connected to it. So, people have started investing into properties. Like I'm very happy to say Tata Group buying a property it's a proud moment for Borivali. Right. कि टाटा, like I would say मेरा नेबर आज, like we happen to have our headquarters in the same building. तो मैं हक से बोलता हूँ, Tata Group is my neighbor. We operate in the same building. So it's a proud thing when you say DMart buying 60,000 square feet in a micro market of Kandivali. There is a DMart not less than 1 kilometer away, and they have a property which they are buying. So that makes us bullish about a micro market. Right. अगर डीमार्ट लेता है या टाटा लेता है, they do n number of market research. उनका market research के बाद वो लोग इस decision पे आते हैं. There are so many legal checkups. That transactions takes not less than 6 to 8 months. Any transaction. और कुछ तो 1-1 साल ले लेते हैं. बराबर. वो लोग इतनी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अपना डिसीजन लेते हैं. अपने प्रोडक्ट को ऑटोमेटिकली एक स्टैम्प मिल जाता है कि इस बंदे ने लिया है तो ये प्रोडक्ट में सब प्रॉपर ही होगा. Got it. One more question came up to my mind was like today the concept of REITs and InvITs is coming up a lot. We can first touch up the REITs, then InvITs, then the difference. So I think we will have a mixed audience. So let me also make people understand what is a REIT. Right. Real estate investment अगर आपको करना है, कोई property is worth 100 crores. आज एक फेस था कुछ साल पहले कि HNIs, big houses, big funds, only those had a chance to buy an office space or a pre-lease property in a grade A property.
ग्रेड ए प्रॉपर्टी में अगर किसी को इन्वेस्ट करना है, सबको इतना ओपन चांस नहीं था, बट आफ्टर रीट्स रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का जो एक बहुत अच्छा चीज़ पूरे वर्ल्ड में स्टार्ट हुआ है, और इंडिया में भी बहुत सारे रीट्स अभी आ गए हैं। सो क्या होता है कि एक 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उसको आप डिवाइड बाय 100 करो, 1 करोड़ रुपए अगर आपको इन्वेस्ट करना हो, यू कैन बी पार्ट ऑफ दैट ग्रोथ स्टोरी। यू कैन बाई 1 करोड़ रुपीज का पार्ट इन दैट पर्टिकुलर रीट। जितना रेंटल इनकम होगा, आपको आपका जितना परसेंटेज होल्डिंग है उतना आपको रेंट मिलेगा। राइट। बहुत सारे रीट्स आर स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड, सो यू कैन इन्वेस्ट। जैसे स्टॉक मार्केट में बोलते हैं कि एक कंपनी 100 करोड़ का है, तो आप 100 करोड़ की कंपनी को अगर आप समझो 25, 30, 50,000 के शेयर्स खरीदने चाह रहे हो, तो आप रीट्स की तरह आप उसमें जो भी कंपनी वो चीज वो असेट में डील कर रहा है, आप वो कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हो। सो रीट, ऑफ कोर्स, पीपल ऑफ आर एज who has just started real estate and they want to invest, they are into other industry और उनके पास एक छोटा पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए, they can get into a REIT. One, of course, please ये कंसेप्ट को और समझने के लिए आई वुड इंसिस्ट, डू योर ओन रिसर्च, कंसल्ट योर चार्टर्ड अकाउंटेंट, दे विल हेल्प यू। ब्लूप्रिंट्स को स्टडी करो, आजकल ब्लूप्रिंट को सीख कर ही काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें आपको, यू गेट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स। सेकेंड, इन्विट्स, like I'm a big fan of our road minister, highway minister, Shri Nitin Gadkari ji. Have got 3 to 4 chances to have interaction with him. His vision is out of the world when you think about green fuel or roads. So there are a lot of highway developments happening. तो जैसे हाईवेज बनते हैं, वहाँ पे ब्रांडिंग अपॉर्चुनिटीज होती है। लाइक यू कैन सी अ गुड होर्डिंग स्पेस। आपसे कोई भी, आप यहाँ से पूना जाओ, आप जल्दी पहुँच जाओगे, बट यू विल एंड अप नॉट स्पेंडिंग अराउंड 700 or 800 rupees paying toll. You know, there are food, good washrooms, अच्छे food spaces. तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं, वो हाईवे को ग्रो करने के लिए, देयर इज एन इनकम विच the government makes out of it, Right. through toll, through the hoarding spaces, and there are multiple ways where they make money. Now, if a government is making money, honorable minister श्री नितिन गडकरी जी, उनको मैंने एक बार बोलते सुना था कि बड़े फंड्स ने, बड़े लोगों ने बहुत पैसे बनाए, बट अभी मुझे चाहिए कि मेरा एक हिंदुस्तानी जो हक से पैसे कमा रहा है और 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 स्मॉल अमाउंट वो इन्वेस्ट करना चाहे, तो उसको मिनिमम 8% रिटर्न उसको मिले पर एनम, और वो हर महीने मिले, उसके लिए मैं इन्विट्स ला रहा हूँ। तो आप ये हाईवे में 0.0005% खरीद सकते हो बाय इन्वेस्टिंग अ वेरी स्मॉल अमाउंट, एंड जो हाईवे का ग्रोथ हो रहा है, यू आर गेटिंग दैट मनी आउट ऑफ इट। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। अगेन, रीट्स, इन्विट्स, छोटा इन्वेस्टर अगर हो, छोटा एज इन जिसको छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करना हो और जल्दी एग्जिट भी करना हो। अगर आप एक घर खरीद रहे हो, एक ऑफिस खरीद रहे हो, आपको अग्रीमेंट करना है, देयर आर अ लॉट ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन टू बी डन, बट इन्विट्स है, रीट्स है, यू कैन एंटर टुडे, एग्जिट इन 5 days, एंटर टुडे, मेक exorbitant profit, exit after few years, एंटर टुडे, स्मॉल अगर लॉस है, आपको बुक करना है, आपको और कहीं वो पैसे को डाइवर्ट करना है, exit is very much easier. Got it. So we'll move on to the associations part. You are a vice president of Mumbai Developers Association. You are also a member of Naredco NextGen National. I would want to understand, what is the benefit you attain out of being a part of these associations? What does the association's goals are, and how does it help in changing the industry as well? मैं मूवीज बहुत देखता हूँ, तो मैं हमेशा बोलता हूँ, मतलब डायलॉग्स की तरह बोलूँगा। एक मूवी का डायलॉग था, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। ये चीज़ में एसोसिएशन का बेनिफिट क्या है? एक्सपोजर, एक्सपोजर, एक्सपोजर। दैट इज द मोस्ट, आई पर्सनली फील। सेकेंड, you have any good association you talk about, there are anywhere between 800 to
3,000 real estate developers who are part of that particular community. They sit together. They plan events together. They share their grievances amongst themselves. Like I remember in BDA, we have done n number of, like हम लोग को बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि BDA है ना, it is like a flag bearer of the associate of the real estate developers. अगर रियल एस्टेट डेवलपर्स कोई पिन पॉइंट, कोई उनको कोई भी चीज़ इरिटेट कर रही है या कोई भी चीज़ ग्रोथ रोक रही है, अगर आप BDA के पास जाओगे, अगर आप नरेडको के पास जाओगे, they will understand, they will make a representation to the government and then the government will listen to you. एक डायलॉग मुझे याद आ रहा है कि संगठन में शक्ति है, अकेले में सबकी फट्टी है. See, today when we are all together and for the larger good, like if I start thinking कि इसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं है तो मैं क्यों करूँ, तो दूसरा बंदा भी यही सोचेगा. बट व्हेन वी ऑल आर कमिंग टुगेदर, वी आर अंडरस्टैंडिंग कि यार कल मैं ये फेज में रहूंगा और मुझे वो प्रॉब्लम फेस हो सकता है. तो इफ एन एसोसिएशन वी कम टुगेदर, we make a see, government also wants to listen to you, but then talking it out on Twitter, talking it out in a loose statement, it will not work like that. आज हम लोग grievances को proper identify करते हैं. मार्केट रिसर्च जैसे लॉन्च के वक्त हम लोग करते हैं कि मार्केट रिसर्च, उसका स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करते हैं कि उसको कंपाइल करके आज टुडे व्हेन वी से एनी ऑफ द एसोसिएशन, वी हैव द बेस्ट लॉयर्स, वी हैव द बेस्ट टैक्सेशन पीपल, we have the best chartered accountants who are actually compiling things for us. We have the best engineers. Like when we talk about green engineering, we are talking about green construction. We have the best people in the country who are part of our association. The most of the projects that are happening are part of the association. So we know what is happening. Usko compile karke when we give to the government, we get a nicer and a proper answer. Government ko bhi hum log suggestions चाहिए and they want to act on it. And lastly, I would say I'm a big fan of, again I would say Amitabh Bachchan जैसे बोलते हैं, वैसे for our industries Niranjan Hiranandani sir. Now being part of Naredco, Niranjan Hiranandani sir के साथ you get chance to interact. You have Runwals, you have Vadva Group, all the top developers, Chandak, Abhay sir, very dear friend, Abhay Chandak sir being part of the association. You get a chance to interact with all the industry leaders at this young age. So उससे अपने को भी अपने projects में क्या benefit कर सकते हैं. और what is happening is, like the central leadership, like Narendra Modi is a big fan of youth coming ahead. Like ways all the major, you can say MCHI, CREDAI, Naredco, or say BDA, all the three associations, one of the most active role is played by the youth wing. Right. They want us to come together. They want us to come forward, come with a solution, don't come with a problem. That is one thing we have realized. And I think anyone who is planning to get into real estate, I would suggest, like I always insist, we have become friends because of, you know, the n number of, through BDA and n number of events that we have attended. लास्ट 2 साल में इतने इवेंट्स हुए, इतने गेट टुगेदर्स हुए. लाइक देयर वाज एन एक्सपो, देयर वाज रियल एस्टेट एक्सेलरेट जो था, सेल्स कैसे अपन बेटर कर सकते हैं. ये सब इवेंट्स में यू गेट सो मच एक्सपोजर, यू गेट अ चांस टू मीट लाइक माइंडेड पीपल. सो एनीवन हु इज वाचिंग दिस पर्टिकुलर पॉडकास्ट एंड इज थिंकिंग टू join real estate industry as such, follow all the social media channels of major organization. Follow me on social media. Follow Krish, the real estate, our particular this podcast channel. You get to learn about events happening. Be part of those events. Participate in them. That will give you good exposure. और आपको आपकी जर्नी में कौन सी चीज़ पे फोकस करना है, उसमें आपको हेल्प करेगा. Like, can anybody become a part of these associations? Like, is there any requirement in these associations, such as you have to be a broker or a channel partner or a developer or an agency who does or enhances work of the real estate industry? Right. So major
three associations that I am closely associated with: Naredco, Brian Mumbai Developer Association BDA, or say MCHI Credai. Real estate developers are members, but then they have industry partners who can become members. Like Okay. there's a good company who wants to become part of that organization, so they can become industry partners. रियल एस्टेट चैनल पार्टनर्स लोगों के भी बहुत एसोसिएशंस है, जैसे है एरिया ग्रुप, देयर इज नार इंडिया, देयर इज रिल्टर्स, देयर आर एन नंबर ऑफ ग्रुप्स, देन देयर आर माइक्रो मार्केट प्लेयर्स which are doing phenomenal work. उनके आप अगर events देखोगे, they have events which are attended by more than 2,000, 3,000 people. They have a budget of 5-6 crore rupees. You know, so much information is given to real estate channel partners. They have the best speakers from across the world coming to take sessions. So associations, be it any industry, like there will be non-real estate people watching this. अगर आप एक फार्मा इंडस्ट्री में हो, वहाँ पे भी एसोसिएशंस होता है. एसोसिएशन का पावर है, जैसे मैंने बोला, संगठन में शक्ति है, अकेले में कुछ मजा नहीं है. लाइक यू नो, अकेले में सबकी फटती है, बट लेट्स मेक इट पॉलिटिकली राइट. अकेले में you can't do much, but when like-minded people from your industry come together, you can do everything. So we are coming towards end of our session. So one question which I had to ask you was, you are a man who does his work very sincerely and responsibly. So I want to ask you the mistakes you made in your journey, some of the important that you can share over here. So again, I would say it's just a decade of my real estate journey. तो मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि मैंने मिस्टेक किया है. हाँ, मिस्टेक किया है और मैं उसको वापस दोहराऊंगा नहीं. हाँ, कुछ चीज़ें हैं which you know I don't want to go again through it, but then few things I thought it was right at that phase. ठीक. अगर आज का चिंतन वो सेम चीज़ करे तो उसका मतलब बोलते हैं ना, उसका आंसर या what is coming out of it would be totally different. So I will not say I'll not repeat those things. I might repeat, like a lot of people, a lot of phase in my life, I used to trust blindly. I used to be available for my friends and for my association or for my people whom I feel ये मेरा बंदा है तो I am available for them. A lot of people think यार इतना it's not worth it. बट मुझे ऐसा लगता है कि वो फेज में मैंने वो जो किया वो राइट था. आज भी अगर मुझे करने मिले, वन इफ आई जेन्युइनली हैव द टाइम, आई वुड. नहीं तो मैं किसी का इफ आई एम समवन्स फ्रेंड, आई मीन इट व्हेन आई से आई एम समवन्स फ्रेंड. आई हैव टू बी देयर फॉर देम. राइट. सो आई पर्सनली फील मिस्टेक्स आर समथिंग विच हैपन, बट उसको अवॉइड आप कर ही नहीं सकते हो. हाँ, बट उससे आपको लर्न करके वो उसको आगे कुछ ड्रास्टिक लॉस ना हो, उसके लिए अगेन यू कैन डू राइट थिंग्स. एज सच मिस्टेक मुझे ऐसा लगता है कि एट वन पॉइंट ऑफ फेज ऑफ माई लाइफ आई वॉज मोर इन टू नंबर्स. आई वॉन्टेड टू टेक अप एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बट फ्रॉम लास्ट 2-3 years we have been very choosy with the kind of projects we want to be associated with, the kind of people we want to be associated with. बिकॉज एक प्रोजेक्ट अगर आप जो करते हो, इट्स लाइक अ वेडिंग. इट्स लाइक यू आर स्पेंडिंग योर मॉर्निंग्स, योर इवनिंग्स, योर नाइट्स, योर वीकेंड्स, योर वेकेशंस विद दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, विद दैट पर्टिकुलर टीम. सो नाउ आई एम वेरी very choosy with the kind of projects I am interacting with. And पहले भी था, आज भी ऐसा है. अगर कोई चीज़ में मज़ा आता है तो वी आर वेरी कीन. वी डोंट थिंक अबाउट द मॉनिटरी साइड ऑफ इट. एंड वी आर अगेन, मॉनिटरी इज नॉट एवरीथिंग. देर आर अ फ्यू थिंग्स, लाइक टू गिव यू वेरी मेरा एकदम ओपन, इफ आई टेल यू द प्रोजेक्ट्स दैट आई एम डूइंग इन KDMC, that project might not give me so much financial gains as any of my commercial projects that we are doing in MMR. क्योंकि वहाँ पे अगर मैं
यहाँ पे अगर मैं एक ऑफिस 4-5 CR का सेल करूँगा, वहाँ पे मेरा एक घर 20 लाख का है. सेम टच पॉइंट से, सेम इंटरेक्शन है, सेम CRM है. बट देन आज नंबर्स में अगर मैं बताऊँ तो एक ऑफिस बिका है, एक ट्रांजैक्शन हुआ है, वहाँ पे 5 करोड़ डिवाइड बाय 20 lakhs करो, उतने ट्रांजैक्शंस हुए हैं. सो यू नो, देन अगेन यू नो, राइट नाउ फॉर दैट थिंग gives me more high कि यार this year I'll be doing 2,500-3,000 transactions. So that's a different phase. Fair. Again, mandate is something which we have right now taken a break because we are focusing on the development side of it. But mandate is something which I can't leave. Like, you know, if there's a good project, we are very keen to get associated with it. Great to know that. And we'll move on to the last section, which is the rapid fire. So I'll start off with your favorite food. I like Indian food, Mughlai. Favorite color? Black. A book you will recommend to everyone. Rich Dad, Poor Dad. Who is your inspiration role model? Krish. No. Dude, at this age जो आप ये कर रहे हो, I'm not kidding right now. I'll be very honest to you. ये आप जो कर रहे हो, you don't know what kind of ये आपको कितना 2-fold, 3-fold, 5-fold returns देगा ना आपको. You don't know right now what you are doing. Right. ये आपको, you are doing the rightest thing at this age what you can do about real estate. I'm very thankful on behalf of the real estate community to you for starting this podcast. Thank you. But who is your inspiration role model? My dad, Dr. Bharat Vasani. Okay. You would prefer the mandate business or the developers business right now? इंसान को दो आंखें होती है, तो मैंडेट बिजनेस मेरा लेफ्ट आई है, रियल एस्टेट डेवलपमेंट इज माय राइट आई. Which market would you choose to work on? Let's say MMR, KDMC, Lonavla, which one? I would choose only one market, India. Wow. So if I get a good project in Noida, Pune, or Raipur, Raipur market is next level good. I have visited that market. So you know, I want to have projects all across India. We are going to have another session on talking about different markets in India. I don't mind. So next question is, what would you invest in? REITs or InvITs? I would invest in a company. Like if it's an InvIT or a REIT, I would study the company, understand their portfolio, and then get into it. Okay. To give you like, sorry, मेरा ना short answer होता ही नहीं है. मेरा हर आंसर थोड़ा बड़ा होता है. But then there are number of REITs. अभी वो REIT क्या hold कर रहा है? They have amazing properties. There are a few REITs who are running McDonald's all across, like, you know, some part of India. So you study something like that. So invest in a company, invest in a person. Like Wisebiz में invest क्यों करना है? क्योंकि वो चिंतन वसानी है उसमें. इसमें क्यों invest करना है? ये talk show में ये क्रिश कर रहा है. He has an amazing team, but you know, Krish is leading it. So you know, invest into a person in a company. What would you like to sell, or what would be easier for you to sell, a commercial property or a residential? I personally am more towards commercial right now because my portfolio is filled with commercial properties in MMR. अगर आप चिंतन वसानी इन KDMC के पास जाके क्वेश्चन पूछोगे तो वो बोलेगा रेसिडेंशियल. If he goes to the second home वाला चिंतन वसानी, I would sell you a brand. Got it. So here we are, concluding our session. Thank you, Krish, for having me, and I had a great time. No, thank you for coming up here, sharing your insights, opinions, advice to me, because this is where I'm in my learning stage, and having a dedicated time from people like you all is very grateful and beneficial for me. So I respect the time you took out to come here and share your advice to me, and as well as whoever is making a benefit out of this podcast. Thank you, Krish. And I have always told you, anything for your this vision of helping the real estate industry, and a lot of people, I'm gonna reach out to you. मैंने Krish को वादा किया है कि and I'm gonna get them on this particular platform. So you know, few of the people like Vijay Vadwa uncle, I'm gonna reach out to you. we want to have Niranjan Hiranandani sir. So you know, I think it's an amazing step that you have taken. Let me also take this opportunity to
the backend team which is helping you with this. Thank you to the entire team behind, the editing part, the shooting part. Joy and Vraj. Thank you so much. Thank you. So, I'm hoping to see you soon again here, same place, same. Thank you. If you like this podcast, please like it, please share it, and please subscribe it. Bye.